अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था और हमने डॉट प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम इसके फर्दर कुछ क्वेश्चन, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि हमारी जो है वो ताकि ग्रिप हो जाए हमारी इस टॉपिक पे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं वो है find the number z so that the triangle with the vertices is a right triangle with the right angle at c. हमने एक ऐसा नंबर z फाइंड करना है। आपके पास तीन वर्टिसेस गिवन है। The first vertex is a 1 minus 1 0. The second vertex is b, that is minus 2 2 1, and the third vertex is c, that is 0 2 z. ये हमारे पास तीन वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के। इस इन तीनों वर्टिसेस में से एक अननोन मौजूद है, दैट इज सी। उसमें एक अननोन मौजूद है d, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड z so that the this triangle that is formed by the three vertices a b and c is a right angle triangle with the right angle at c. हमें z की वो वैल्यू फाइंड करनी है कि जिसके लिए a b c एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए और उसका राइट एंगल जो होगा वो c पे होगा। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं कि जिसका हम राइट एंगल जो है वो हम सी पे रखते हैं। तो ये है सी, यहाँ पर राइट एंगल है और ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब अगर दो वेक्टर है हमारे पास सी ए और सी बी, ये ट्रायंगल के दो साइड हैं, ये दो वेक्टर थे। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये हमारे पास ए बी और सी हमारे पास पॉइंट्स बने। हम सबसे पहले तो इनको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म देते हैं। पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ये क्या बन जाएंगे, 1 इन द डायरेक्शन ऑफ आई के ऊपर। लास्ट टाइम मैंने बेटे आपको बताया था हैश लगाएं या ना लगाएं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1 इन द डायरेक्शन ऑफ जे प्लस 0 इन द डायरेक्शन ऑफ के। ओ बी पोजीशन वेक्टर इज minus 2 in the minus 2 in the direction of y plus 2 in the direction of j plus 1 in the direction of k. OC is a vector 0 in the direction of y plus 2 in the direction of j plus z in the direction of k. ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर्स आ गए जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चाहिए होंगे। अब हमें इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो ये है कि C will be a ABC will be a right angle triangle with the right angle at vertex C. तो बेटे इसका मतलब क्या है, ये राइट एंगल कब बनेगा, when the two vectors CA and CB will be orthogonal and will be perpendicular. जब हमारे पास ये दोनों वेक्टर्स CA और CB ऑर्थोगोनल हो जाएंगे या परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो तभी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। और ये दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर कब होंगे, कि जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट CA और CB, अगर ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब है कि CA और CB के डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो बेटे ये वो इंफॉर्मेशन है जिसको हम यूज करेंगे और हम C की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है CA और CB। CA का क्या फॉर्मूला होता है, CA का फॉर्मूला होता है OA minus 4C। OA is 1 in the direction of I minus 1 in the direction of J plus 0 in the direction of K, and OC is 0 in the direction of I plus 2 in the direction of J plus 3 in the direction of K. अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 minus 0 1 in the direction of I minus 1 minus 2 plus minus 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 1 minus 2 minus 3 in the direction of J 0 minus Z plus minus 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 Z in the direction of K. So this is the formula for CB. Similarly, we have to find CB. The formula for CB will be OB minus OC. OB is minus 2 in the direction of I plus 2 in the direction of J plus 1 in the direction of K minus 0 in the direction of I plus 2 in the direction of J plus 3 in the direction of K. After subtraction, it will become minus 2 minus 0 minus 2 in the direction of I, 2 minus 2 plus minus minus 2 minus 2 0 in the direction of J plus 1 minus Z plus minus minus Z 1 minus Z। इसको बेटे मुझे क्योंकि हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, so we have to put a bracket around this term in the direction of K, and this is CB. Now, since it is given in the question that the triangle is a right triangle
with the right angle at vertex C, it implies CA is perpendicular to CB. Further, we can say that the dot product of CA with BCD should be equal to 0. Since these two vectors are perpendicular, it means that their dot product must be equal to 0. CA is 1 in the direction of I, minus 3 in the direction of J, minus Z in the direction of K, dot CB is minus 2 in the direction of I, plus 0 in the direction of J, plus 1 minus Z in the direction of K is equal to 0. डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते होते थे, हम रिकॉल कर लेते हैं, आई को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस माइनस 3 into 0 because the coefficient of j is 0 over here, plus minus z into 1 minus z is equal to 0. After multiplication, what will it become? It will become minus 2 plus 0 minus z minus minus plus z square is equal to 0. After rearranging, it will become z square minus z minus 2 is equal to 0. z square minus z minus 2 is equal to 0. अब हम मिडल टर्म जो है उसको स्प्लिट कर देंगे and we can split the middle term like minus 2z plus z minus 2 is equal to 0. z into z minus 2 plus 1 into z minus 2 is equal to 0. z minus 2 into z plus 1 is equal to 0. It will become z minus 2 is equal to 0 or z plus 1 is equal to 0. Z is equal to 2 or z is equal to minus 1. So these are the two required values of z for which the triangle will be a right angle triangle with the right angle at the vertex C. Z is equal to 2 and C is equal to minus 1. Now, the next question is show that the midpoint of hypotenuse of a right triangle is equidistant from its vertex. सबसे पहले एक right angle triangle है और उसके हाइपोटेन्यूज हमें ये शो करना है कि उसके हाइपोटेन्यूज का अगर हम मिड पॉइंट लें तो वो इक्विडिस्टेंट होगा इसके वर्सेस से। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। This is 0. This point is on this vertex is named as 0, A, B. This is named as M because it is the midpoint of the hypotenuse. The triangle is a right angle triangle. This M is the midpoint of the hypotenuse AB. We have to show that in this question we have to prove that this midpoint is equidistant from its vertices. इसके तीनों वर्सेस से ये इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये बराबर फासले पे है। It means that the length of OM is equal to the length of MA is equal to the length of MB. That all of three lengths are same. M is equidistant from all of three vertices. M का O से डिस्टेंस, M का A से डिस्टेंस और M का B से डिस्टेंस सारे के सारे इक्वल। अच्छा देखिए, let O, we are taking O as origin, A is 0. अच्छा ये पॉइंट्स हम कैसे ले रहे हैं? हम assume कर रहे हैं that this O lies on the origin. Origin means its x coordinate and y coordinate both will be 0. This A is on the x-axis, height is 0. So this point will be x coordinate is A, y coordinate is 0. This B vertex, x coordinate 0, y coordinate is B because x axis पे इसकी वैल्यू 0 होगी because this is origin. इसकी वैल्यू x axis पे 0 होगी, y axis पे इसकी वैल्यू B होगी. ठीक है? And B will be the point B0, be the vertices of given triangle. ठीक है? ट्रायंगल के ये तीन वर्टिसेस हो गए हैं O, A and B. AB is the hypotenuse of the triangle. M is the midpoint of the hypotenuse or the midpoint of AB.
These are the points. We have to take, first of all, we have to take the position vector. What will be the position vector OA? OA will be A in the direction of I, 0 in the direction of J. OB will be B in the direction of I plus 0 in the direction of, sorry, 0. So it will be 0 in the direction of I plus B in the direction of J. These two are the position vectors OA and OB. What will be M? M मिड पॉइंट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला हो सकता है बेटे? मिड पॉइंट अगर हमने ए और बी का ए बी वेक्टर का मिड पॉइंट फाइंड करना होता था तो उसका फॉर्मूला होता था पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी डिवाइडेड बाय ओ divided by 2. Position vector of A plus position vector of B divided by 2. So what will be OM? OM will be position vector OA plus position vector OB divided by 2. मैं आपको बेटे एक दफा क्लियर कर दूं कि मिड पॉइंट फाइंड कैसे करते हैं. अगर आपको ये मिड पॉइंट फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ द पॉइंट तो इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर होता है a plus 0 divided by 2 and midpoint being आपको बता देती हूँ a midpoint becomes a plus 0 divided by 2 in the form of the point. If we are talking about the point m plus 0 plus b divided by 2, so m point becomes a by 2 comma b by 2 and the position vector of OM will be a by 2 in the direction of I plus b by 2 in the direction of J. This is the position vector OM. ठीक है, हमने पहले m फाइंड किया है पॉइंट और उसके बाद हमने पोजीशन वेक्टर लिख लिया. या फिर आप पोजीशन वेक्टर, एक तो ये मेथड है बेटे कि मिड पॉइंट आप फाइंड करें इन द फॉर्म ऑफ द पॉइंट एंड देन यू टेक द पोजीशन वेक्टर OM. The second way out is if you directly want to find the position vector OM, the method will be the position vector A plus position vector of B divided by 2. It will become AI plus 0J plus 0I plus BJ. आप चाहे तो आप उस तरह से कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं. आप चाहे तो इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, दोनों से आंसर सेम रहेगा. AI plus BJ divided by 2 1 by A by 2 in the direction of I plus B by 2 in the direction of J. Again, I'm explaining again that if you want to direct find out the position vector OM, this will be the way out. But the other method is you can first find out the point M and then afterwards you can find the position vector OM. ठीक हो गया. अब हमें अगला काम क्या करना है? हमने OM का पोजीशन वेक्टर बना लिया है. अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है OM का, AM का और BM का, और फिर हम देखेंगे कि क्या ये डिस्टेंस सेम आता है या सेम नहीं आता. First of all, we will be taking distance OM. Distance OM. OM was this, the magnitude. The magnitude of OM will be A by 2 in the direction of I plus B by 2 in the direction of J. It will be by applying the formula for the magnitude under root A by 2 whole square plus B by 2 whole square is equal to A square by 4 plus B square by 4. It will be A square plus B square divided by 4. It will be A square plus B square under root divided by 2 OM magnitude. The next is AM. This is the distance OM. The next we have to find the distance of AM. AM is OM minus OM. OM was A by 2 in the direction of I plus B by 2 in the direction of J, and OA was A in the direction of I plus B in the direction of J. It becomes A by 2 minus A in the direction of I plus B by 2 minus 0 in the direction of J. It becomes A by 2 minus A. It becomes minus A by 2 in the direction of I. You can simplify this by taking LCM. ठीक है, LCM ले लेंगे तो आपके पास आंसर यही आएगा. This is AM. Now we find distance
AN, the distance of AN will be under root minus A by 2 whole square plus B by 2 whole square. It is equal to A square by 4 plus B square by 4. It is equal to 4A square plus B square. In the next step, A square plus B square by 2 AM. Last, we have to find the distance BN. The distance BN vector is equal to OM vector minus OB vector. OM vector was A by 2 in the direction of phi plus B by 2 in the direction of J minus 0 in the direction of phi plus B in the direction of J. It is equal to A by 2 minus 0 in the direction of phi plus B by 2 minus B in the direction of J. It further becomes A by 2 in the direction of phi minus B by 2 in the direction of J. Again, you can simplify this expression by taking this. We have found the vector Bn. In the end, we will find the magnitude of Bn so that we can take the length. It is equal to magnitude of A by 2 in the direction of phi minus B by 2 okay, in the direction of J. It is equal to under root A by 2 whole square plus minus B by 2 whole square. So that becomes A square by 4 plus B square by 4. It after simplification will become A square by B square by 2. This is the length OM. In the end, we can write the length of OM is same as length of AM. It will be same as BM. So all of three lengths are same. This shows that the midpoint of hypotenuse is a of a right triangle is equidistant from its vertices. Okay, moving towards the next question. Next question is about a semicircle, and the question is prove that the angle in a semicircle is a right angle. Prove that the angle in a semicircle is a right angle. First, we have to form a semicircle. This is the semicircle. The midpoint, we will name the midpoint O. The center of the circle is O. This is P. This is P. This is a random point P. This is a random point P. What we have to prove, this is the position vector OP. This is the position vector OP. But we have to prove here that the angle in a semicircle is a right angle. कि हम semicircle के अंदर कोई भी एंगल बनाएंगे तो वो right angle होगा. सेमीसर्कल के अंदर अगर हम कोई भी एंगल बनाएंगे तो वो राइट एंगल होगा. यानी हम अगर सेमीसर्कल के ऊपर कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं जैसे कि हमने अभी लिया है और हम अगर इससे एंगल ड्रॉ करें लाइक हम इसको ए के साथ मिलाएं और हम इसको बी के साथ मिलाएं देन दिस एंगल विल बी अ राइट एंगल. वी हैव टू शो दैट दिस एंगल विल बी अ राइट एंगल. ठीक है. What was the question? Show that the angle in a semicircle is a right angle. It means that if we take any random point on a semicircle and we construct the angle, then the angle should be the right angle. तो हमने यहाँ पर एक P random point ले लिया, उसको A और B के साथ जब join किया, हमें ये show करना है कि P का जो angle बन रहा है that is a right angle. Let A and minus A be the position vectors of A and B. अच्छा, अब जरा बात को समझ लेते हैं. फॉर इंस्टेंस कि हमने इस पोजीशन वेक्टर को ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा. द पोजीशन वेक्टर फॉर ए विल बी ओ ए. इस पोजीशन वेक्टर को मैंने नाम दे दिया ओ ए को ए का. जो पोजीशन वेक्टर बी का होगा दैट विल बी ओ बी. वो पोजीशन वेक्टर क्या होगा. ए का जो भी पोजीशन वेक्टर ए है अगर फॉर इंस्टेंस कैपिटल ए का पोजीशन वेक्टर अगर स्मॉल ए है
तो ये जो पोजीशन वेक्टर होगा ये माइनस ए हो जाएगा बिकॉज इट लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए। ठीक है, ये ए की अपोजिट साइड पे है। यहाँ पे फॉर इंस्टेंस ए का पॉइंट है, if this point is for instance 2 0, then this point will be minus 2 0. It means that this position vector will be negative of this vector. Okay, ये दो पोजीशन वेक्टर्स हो गए। लेट R be the position vector of point P। ठीक है, पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर को हमने नाम दे दिया R का। इन दो पोजीशन वेक्टर्स को हमने नाम दिया हुआ है A का और माइनस A का। अब हमें शो क्या करना है बेटे, हमें शो करना है कि PA एंड PB जो है ये आपस में राइट एंगल बना रहे हैं। इट मींस दैट द टू वेक्टर P and PB are orthogonal, are perpendicular. It means, it further means that the dot product of PA and PB will be zero, क्योंकि जो perpendicular वेक्टर होते हैं उनका dot product zero होते हैं। So we have to show that the dot product of PA and PB will be zero। तो पहले तो हमें PA और PB पता करने पड़ेंगे और फिर उनका dot product लेना होगा। So what is the formula for PA? OA minus OP. The position vector of A is A vector minus R vector. This is PA. Now the next term is PB. It is OB minus OP. OB is OB. OB, this vector is minus A vector minus OP. OP is R vector. So PB will be minus times A vector plus R vector. Now we will take the dot product of PA and PB and we will show that this dot product is 0. PA dot PB is equal to PA is A minus R vector into minus A plus R vector. माइनस साइन को हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। A वेक्टर माइनस R वेक्टर, A वेक्टर प्लस R वेक्टर। ठीक है, अब हमें इन दोनों के दरमियान में क्या लेना होता है, डॉट प्रोडक्ट। सॉरी, मैं डॉट प्रोडक्ट को मेंशन करना भूल गई। वी हैव टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट इनका क्या आएगा, माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस माइनस माइनस ओके ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस माइनस माइनस आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। हम सबसे ऊपर काम करते हैं यहाँ पे पी ए डॉट पी बी इज इक्वल टू माइनस A dot A vector is magnitude square of A vector plus A vector dot R vector minus आपको पता है कि R dot A vector is equal to A dot R vector, तो मैं इसको A dot R vector लिख देती हूँ ताकि ये ऑपोजिट साइंस के साथ आएंगे तो ये आपस में कैंसिल हो सके। माइनस R dot R मीन मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ R। It further becomes minus A magnitude का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये दोनों टर्म्स प्लस माइनस साइन के साथ हैं, so they will be cancelled out, ruled out। अच्छा, now since we know that R vector will be equal to A vector, R vector will be equal to A vector। Why? Because बेटे R vector क्या है, R vector is this OP and A vector is this OA। We know the property of a circle that if we join the center of the circle with any point on the circumference or on the circle like A or P, then this length is equal to the radius of the circle। अगर आप O को A के साथ ज्वाइन करते हैं तो ये भी रेडियस के इक्वल है, अगर आप O को P के साथ ज्वाइन करते हैं तो ये भी रेडियस के इक्वल है। तो इट मींस दैट A वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर, इनकी लेंथ सेम है। ठीक है, इट इज इक्वल टू माइनस 0। मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट क्लियर करते चलो, the position vector A is not equal to position vector R। The position vector A is not equal to position vector R।
Why? This is the position vector R. The vector joining O to P is position vector R. The vector joining O to A is position vector A. Both the vectors are different. The vectors are not same. The vectors are not equal. Why? Because the vector is having two things, लेंथ एंड डायरेक्शन. लेंथ एंड डायरेक्शन, वेक्टर दो चीजों से मिलकर बनता है, लेंथ और डायरेक्शन. दोनों सेम हो तो वेक्टर्स इक्वल होते हैं, दोनों सेम ना हो तो वेक्टर्स इक्वल नहीं होते. यहाँ ए वेक्टर की डायरेक्शन आर वेक्टर की डायरेक्शन सेम नहीं है, सो द टू वेक्टर्स कैन नेवर बी इक्वल. हाँ, यहाँ पर बेटे वेक्टर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर वेक्टर्स की बात नहीं हो रही है. यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ए वेक्टर की लेंथ की. और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? आर वेक्टर की लेंथ की. द लेंथ ऑफ बोथ वेक्टर इज सेम बिकॉज ओ ए की लेंथ कितनी है? रेडियस के इक्वल. ओपी की लेंथ कितनी है? रेडियस के इक्वल. लेंथ ऑफ बोथ वेक्टर्स इज सेम, therefore the two quantities will be cancelled out. You will write here that the length of a vector is equal to length of r vector. ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है. दोनों की लेंथ किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ अ सर्कल. तो इसलिए ये दोनों क्वांटिटीज कैंसिल होंगी. वेक्टर्स आपस में इक्वल नहीं है, बट द लेंथ ऑफ द टू वेक्टर्स इज सेम, so the two quantities will be ruled out. I hope this point will be clear to everyone. Now we attempt the last question regarding dot product. वो last question हमारे पास क्या है? Prove that the perpendicular bisector of the sides of a triangle are congruent. Prove that the perpendicular bisectors of the sides of a triangle are congruent. अच्छा, क्वेश्चन क्या है, हम इसको समझ लेते हैं. If we draw a triangle, A, B and C, if we draw a triangle and perpendicular bisector क्या होता है बेटे? Bisector means a point that divides the line into two equal parts. Bisector means कि हर वो पॉइंट, हर साइड के लिए एक ऐसा पॉइंट जो कि उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा हो. ठीक है, ये these are the bisectors जो कि परपेंडिकुलर की, जो कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स को दो बराबर पार्ट्स में तकसीम करें. वो डिवाइड, we name these points as D, E, F. Okay. Perpendicular bisectors means that they make an angle of 90 degree. They make an angle of 90 degree. 90 degree angle का क्या मतलब होता है कि OD is perpendicular to OB, OE is perpendicular to BC, OF is perpendicular to AC. ये मतलब है perpendicular bisector का कि ये bisect भी कर रहे हैं साइड्स को और ये एंगल कितना बना रहे हैं. All of them are making an angle of 90 degree. We have to prove in the question that if we take any of the triangle, then the perpendicular bisectors of the sides of the triangle will be concurrent. Concurrent means that all of the points meet at single point. तीनों पॉइंट एक ही, तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो एक पॉइंट पे मिलते हैं या वो एक ही पॉइंट से गुजरते हैं. They cut each other at a point which is named as zero. हमने ये शो करना है कि ये तीनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे मिलते हैं and this point is named as zero. अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं. Let A, B, C be the position vectors of the vertices A, B, C respectively. हमने तीनों जो वर्टिसेस थे उनको पोजीशन वेक्टर्स को क्या नाम दिए थे? स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c. Small a, small b and small c. Then as we saw in the previous question, D is the midpoint. So what should be the position vector of D? Position vector of D should be A plus B divided by 2. Position vector of A plus position vector of B divided by 2. Similarly, OE is position vector of B plus position vector of C divided by 2, and OF is equal to A plus C divided by 2. Okay. Now we are concerned with AB, BC and AC. AB, BC and AC. हम वो ये भी देख लेते हैं कि ये वेक्टर्स किसके इक्वल हैं. AB is equal to AB vector is equal to OB minus OA, OB minus OA,
OB minus OA means B minus A, position vector of B minus position vector of A. AB, BC, BC means OC minus OB is equal to C minus B vector. This is the termed as BC. AC, AC is equal to OC minus OA, position vector of C minus position vector of A. So we have all of these 6 quantities. Now, but we have the information. The information is that OD is perpendicular to OB. AB, sorry. OD is perpendicular to EB. OD is perpendicular to EB. Hence, OD is perpendicular to EB. It means that the dot product will be 0. Will be 0. It will further become, what was OD? OD was A vector plus B vector divided by 2 dot AB. AB is B minus A is equal to 0. 2 को राइट साइड पे मूव करवा देंगे, so it will be A plus B vector into B minus A vector, the dot of these two vectors. ठीक है, इनका डॉट रह गया. डॉट जब इनका लेंगे तो ये डॉट क्या आएगा, OD dot sorry, this is equal to 0. Okay, इसको सॉल्व करते हैं. A vector dot B vector plus B plus A vector dot B vector plus minus minus A vector dot A vector plus B vector dot B vector plus minus minus B vector dot B vector plus B vector dot B vector. Since A dot B dot A, one quantity is with plus sign and the other is with minus sign, so the two quantities will be cancelled out. ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे. It further implies B square minus A square is equal to 0. हम इसको 1 का नाम दे देते हैं. The next information is OE is perpendicular to BC. OE is perpendicular to BC. It implies OC dot product of OC with BC will be 0. What was the value of OC? Sorry, OE. OE with BC. OE with BC. OE is perpendicular to BC. OE is perpendicular. What was the value of OE? B vector plus C vector divided by 2 dot product BC. BC was C minus B vector is equal to 0. 2 को हम नीचे साइड पे मूव करवा देंगे तो 2 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा. B vector plus C vector dot C vector minus B vector is equal to 0. B vector dot C vector minus B vector dot B vector plus C vector dot C vector minus C vector dot B vector. Again, the two quantities B vector dot C vector and C vector dot B vector are same, are equal with the opposite signs, so we cancel out हो जाएंगे and we will be left with C square minus B square equal to 0 and we will name it as equation 2. अच्छा, अब बेटे हमने प्रूफ ये करना है कि ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, O में से या O में से गुजरते हैं. इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करते हैं, हमने ये प्रूफ करना होता है कि OD, OE और OF तीनों पॉइंट O पे मिलते हैं या पॉइंट O से गुजरते हैं. हम सपोज ये कर लेते हैं कि OD और OE जो है ये दोनों पॉइंट O से गुजरते हैं. ठीक है, OF जो है इसको अब हम शो करेंगे कि ये पॉइंट O में से गुजरता है और इसको हम शो ये करेंगे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AC का. ठीक है, हमने एज्यूम ये किया है कि OD, OE ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं और ये पॉइंट O पे मिल रहे हैं. अब हम ये शो कर रहे हैं कि ये जो तीसरा जो पॉइंट O पे मिल रहा है ना, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AC का, ये हम शो करना चाह रहे हैं. और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम शो कैसे करते हैं वो जरा हम देख लेते हैं. If we add equation 1 and equation 2, if we add equation 1 and equation 2, what will we get? C square minus B square is equal to 0. Right side to 0 plus 0 0 ही होगी. तो B square minus A square plus C square minus B square is equal to 0. C square
वेक्टर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बेटे हमें रिवर्स स्टेप्स चाहिए, हमें रिवर्स चलना है, ठीक है। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल था, बी प्लस सी प्लस बी एंड सी माइनस बी, सी प्लस बी एंड सी माइनस बी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। हमें रिवर्स चलना है, बिकॉज यहाँ हमने ये किया हुआ था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे तो उससे हमारे पास ये आइडेंटिटी आई थी। अब ये आइडेंटिटी है और उससे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहचाना है, तो हमें इस यहाँ से रिवर्स करना पड़ेगा। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब था सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ से आगे चलिए, अब हमने इसके नीचे 2 भी लाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 डॉट सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। कैसे हमने लिख लिया 2, बिकॉज बेटे अगर आप इसके दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर लेंगे, 0/2 तो 0 ही होता है। इस साइड पे जो 2 है उसको हम फर्स्ट टर्म के नीचे लिख देते हैं। ऐसा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसा कर सकते हैं। नाउ व्हाट वाज c vector plus a vector divided by 2? C vector plus A vector divided by 2, it was OS dot C vector minus A vector. C vector minus A vector, it was AC. It means that the dot product of OF with AC is equal to 0. It means that OF is perpendicular to AC. Is perpendicular to AC. OF is perpendicular to AC. This shows that OF is perpendicular to AC, and it implies that the perpendicular bisectors of the triangle are concurrent. I hope that the question will be clear for everyone. इसके साथ ही बेटे हमारी डॉट प्रोडक्ट की प्रैक्टिस कंप्लीट होती है. In the next lecture, we will be discussing about the cross product or scale. Cross product or the vector product. Thank you.